Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 FY23 results conference call of Praveg Limited, hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisors. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Thanks for joining the conference call of Praveg Limited. I would like to welcome Mr. Vishnu Patel, Chairman, Ms. Prolina Barada, Director, Mr. Mukesh Chaudhary, Company Secretary. Prolina ma'am, over to you. Thank you. Namaskar, everyone. I extend a warm welcome to all of you joining us for the conference call of Praveg Limited to discuss our outstanding performance in the Q4 of financial year 23 and for the year of for 2022 and 23. So, Praveg Limited, a leading company in the industry, has established its presence in diverse business segments such as tourism and hospitality, exhibition and event management. We take pride in our independent and sophisticated infrastructure, our expert and experienced manpower, and our in-house creative studio. These strengths give us a competitive edge and enable us to cater to the diverse needs across business verticals. Speaking of our clientele, Praveg Limited has served a wide range of clients, including the Gujarat state government, large corporates, and renowned entrepreneurs. Our services have been well received and have garnered trust and recognition from various sectors. We are proud to have handled prestigious projects like Tent City Narmada at Statue of Unity, Tent City Varanasi in Uttar Pradesh, and Whiteland Resort at Ran Utsav. Currently, our ongoing project spans more than 3 lakh square meters and have a room capacity of 450. We have already sold 70,000 plus rooms this year in 2023, ensuring the utmost satisfaction of our customers. So allow me to highlight some key achievements from FY23. In January 2023, we successfully commenced operations at Tent City in Varanasi, offering a unique and captivating experience to our esteemed guests. This exquisite resort comprises 200 tents and provides panoramic views of the serene ghats, temples, and historic places. Moreover, I am delighted to inform you that we have secured a valuable work order for the development, operation, maintenance, and management of the Tent City at Gopla Beach at Diu. Over the next 3 years, we will be building 35 tents along with a restaurant and a conference room. Looking ahead, we have recently launched operations at the Lighthouse Beach of Daman. This project features more than 30 tents, that is, and a restaurant and a conference hall. Praveg Limited has also acquired lands at 4 locations like Javai, Velavada, Ranthambore, and Udaipur for the development of high-end hospitality projects. We anticipate these projects to be operationalized in the first quarter of financial year 24, further expanding our offerings. Additionally, we have received a letter of award for the Adalat Stepwell site in Ahmedabad and have planned the development of 3 more resorts in Gujarat, that is in Kevadia, Sasangir, and Sivrajpur Beach, and in Kumbhalgarh of Rajasthan also. These projects are scheduled to commence from December 2024 with an estimated cost of around 90 CR, which will be funded through a preferential offer of 63.7 CR and some internal accruals as well. The tourism sector has witnessed a remarkable resurgence post the COVID lockdown, and we are determined to capitalize on the rising demand for the hospitality industry. So our expansion plans are ambitious, focusing not only on the domestic market, but also exploring opportunities in the international market. As a testament to this, we have recently incorporated a subsidiary company, Praveg Safaris Tanzania Limited in Tanzania, on 24th May of 2020. This strategic move positions us to tap into the potential of the Tanzanian market as well, expanding our reach and services globally. So before we delve into the financial performance of the company during the reported quarter and FY23,
I would like to take a moment to express my sincere gratitude to all of our stakeholders for being an integral part of our growth journey. Your support and involvement have played a crucial role in our success, and we genuinely appreciate your valuable contribution to this. Now, let me present the financial performance of Praveg Limited for the reported quarter and the year 2022-23. This fiscal year has been truly remarkable, with a staggering 87% rise in total income, amounting to approximately 85 crores. This robust growth indicates strong demand and premium pricing for our offerings. Our EBITDA witnessed a remarkable increase of over 2 times, reaching to 45.30 crore, while our net profit surged by 132.26% to 28.4 crore. Our EBITDA margin and PAT margin stood at 53% and 33.5% respectively. A testament to our efficient cost management and premium pricing strategies has helped us reaching this goal so far. The strong demand signals Praveg's continued march on a high growth path, seizing opportunities from the rising tourism industry, both in India and abroad. Moving on to the fourth quarter of FY23, we recorded a total income of 19 crore, reflecting a growth of 12.49%. Our EBITDA stood at 9.92 crore, marking an impressive increase of 32.38%. Notably, our EBITDA margin rose to 52.2% compared to 44.4% in the corresponding period. We achieved a profit after tax of 5.15 crores during this quarter. To appreciate the trust and confidence of our shareholders, we are pleased to recommend a dividend of 4.5 rupees per share. With this, I would like to open the floor for questions and answers. Thank you once again for your presence and continued support. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question is from the line of Avinash Gorakshankar from Profit Mart Securities. Please go ahead. Good morning, Vishnu Bhai, and excellent numbers, very strong reported numbers for FY23. I've got 2 questions. I wanted to understand, Varanasi project started sometime in the mid month of January. So what was the kind of revenue we recorded in the fourth quarter? If you could share that number on a basis to us. And secondly, very surprisingly, we have seen that, EBITDA margins have improved from 44% to 51%. Now, I wanted to understand that despite, having the Varanasi project, how was the company able to manage its EBITDA margin so well that, we saw almost a 600% increase in the EBITDA margin on a YY basis. So if you could add some color here. Namaskar, Jai Hind. Avinash bhai, I want to brief you 2 things which you have asked for. 10 City Varanasi we have started on 13 January 2023. Besides initial teething problems, we have in this quarter revenue of 4.03 crore from Varanasi. Guest appreciation and guest experience was very excellent. But the time for which हमने जो स्टार्ट किया था वो टाइमिंग और मार्च अप्रैल तक का ही बिजनेस हम कर पाते हैं. खास करके अप्रैल मई के अंदर हमें को उसको क्लोज डाउन करना पड़ता है क्योंकि ये जगह जो है वो ऑन रिवर है, रिवर के अंदर है. तो जब फ्लड की सीजन आती है जून जुलाई अगस्त सितंबर तब उसको हमें डिसमेंटलिंग करना पड़ता है और उस वक्त हम वहाँ गेस्ट रिसोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. Besides that, initial marketing was done by my team. अच्छा किया marketing. Government also on the same footing. UP government also want to develop tourism, this kind of tourism. तो काफी अच्छा branding हुआ. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको इनॉग्रेट किया
और योगी जी खुद 2 बार आए विजिट करने के लिए और वहाँ से एक घंटे का इंटरव्यू दिया अपने स्टेट का डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस और मेरे को गेस्ट और गवर्नमेंट से मिला। एंड वी वुड लाइक टू टेल दैट फ्रॉम इवन फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ इज अ प्रॉफिट मेकिंग आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन एंड ऑल कॉस्ट ऑफ वाराणसी। एंड आई एश्योर with my this experience and confidence that next year means October, November, I would like to say that we will start in next November or December, depend upon river and flood situation. तो वो हम चालू करेंगे। तो we are looking for great business in this year up to March 2024. दूसरी बात है EBITDA मार्जिन। आप जानते हैं कि प्रवेग का जो फोकस है वो 2 मेजर फोकस है, इवेंट मैनेजमेंट, एग्जीबिशन एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी। तो सारे साल का जो भी हमारा स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज होता है कंपनी का वो हर मार्च में होता है। तो देयर इज अ स्टॉक प्लस माइनस वेरिएशन ऑफ द एक्चुअल स्टॉक जब हम लेते हैं तो उसका जो वैल्यूएशन आता है वो। और दूसरा हमारी जो टीम है डेडिकेटेड हॉस्पिटैलिटी टीम, वही हम कॉस्ट में जाता है। डेवलपमेंट जो टीम है वो हमारी कैपिटलाइज होती है। डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, अभी अराउंड 10 प्रोजेक्ट है इस साल इनॉग्रेट करने जा रहे हैं इंक्लूडिंग वाराणसी। तो उसका जो टीम है उसका खर्चा वहाँ अमोर्टाइज होता है। तो दिस इज अ वेरी रियल फिगर कि हमारा EBITDA मार्जिन अराउंड 50% ऑलरेडी प्रीवियस क्वार्टर में भी था। इस स्लाइड वेरिएशन ऑफ 5%, इसके बाद उसको अगर नजरअंदाज करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 से 50% EBITDA मार्जिन प्रवेग का रहता है। डिपेंड्स अपॉन मार्केटिंग सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर गेस्ट। थैंक यू। नहीं ठीक है विष्णु भाई, थैंक यू फॉर द आंसर। एक जवाब मेरे को पूछना था, कैन वी एज्यूम दैट जून क्वार्टर जो कंपनी का होता है और जो दिसंबर क्वार्टर होता है, कैन वी एक्सपेक्ट दैट दीज आर द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर द कंपनी विष्णु भाई? आई मीन थोड़ा बहुत सीजनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विल दिस बी द बेस्ट काइंड ऑफ टाइम फॉर कंपनीज परफॉर्मेंस? क्योंकि 4 क्वार्टर में जून और दिसंबर क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्रवेग ने इन क्वार्टर्स में ही कमाया। गुड क्वेश्चन। हिस्टोरिकल आप अगर देखेंगे तो प्रवेग का ऑलवेज 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर इज गुड क्वार्टर। 3rd इज द बेस्ट क्वार्टर ऑलवेज एंड 4th इज द 2nd नंबर बेस्ट क्वार्टर ऑलवेज। लाइकवाइज सेम हियर, ये साल में भी ऐसा कुछ ट्रेंड मेरे को मिलेगा बिकॉज ऑफ अवर इन्वेंटरी, अवर जो रिसोर्ट और जो बन रहे हैं साइट वो सारी इस साल में इनॉग्रेट होने वाली है। तो उसकी वजह से 1st 2nd क्वार्टर नॉर्मल रहेगा, but 3rd and 4th quarter we expecting good business because of 2 reasons. There was only 2 resorts with the Praveg in last year, like except Varanasi which had वो 2.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए वाराणसी था। उसको बात करते हुए हमारे पास 2 ही रिसोर्ट थे। इसमें भी कच्छ का रिसोर्ट सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी में ही काम होता है, 4 महीने का काम है। तो ऑब्वियस है 3rd and 4th क्वार्टर में आता है। पहले 2 क्वार्टर जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो हमारी टेंट सिटी केवड़िया करती है और बाकी का हॉस्पिटैलिटी इवेंट मैनेजमेंट एग्जीबिशन वाला बिजनेस है। तो उसकी वजह से इस साल भी 3rd और 4th क्वार्टर अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बाहर जो रिसोर्ट नए अभी डेवलप होके लॉन्च हो रहे हैं, अभी दमन एक वाराणसी हो गया 13 जनवरी को, 15 अप्रैल को हमारा दमन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई को अभी 2 दीव और दमन दोनों स्टार्ट होने जा रहे हैं विथ सम 15 डेज प्लस माइनस वेरिएशन। वी विल अचीव दैट ऑपरेशन पीरियड। वो 2 जो होने जा रहे हैं उसके 1 आध महीना 1.5 महीने बाद हमारा दीव टू गोगला बीच जो फेमस बीच है वहाँ का वो इनॉग्रेट होने जा रहा है। उसके बाद उदयपुर, वेलावदर, जवाई, रणथंभौर, ये सारे हमारे प्रस्तावित जो प्रोजेक्ट्स है वो यही साल में 3rd और 4th क्वार्टर में रन अप करने जा रहे हैं। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 24 अप्रैल to 25 विल बी इतना जो सीजनल जो वेरिएशन है हमारे क्वार्टर्स में वो सारा कंसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद 1st 2nd क्वार्टर भी अच्छे रिवार्डिंग परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेंगे।
थैंक यू विष्णु भाई. आई थिंक जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन विष्णु भाई, जो अभी पूरे साल का जो रेवेन्यू कुछ 84 crores आया है, इफ मैडम कैन टेल अस व्हाट इज द ब्रेकअप फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी एंड द इवेंट बिजनेस, अप्रोक्सीमेटली शेयर कैसा था? हाँ जी, मैं आपको ब्रीफ करूँ. 10 सिटी नब्बा से ओनली गेस्ट का जो रेवेन्यू आया वो 25.59 करोड़ है. 10 सिटी वाराणसी 4.03 करोड़ है. व्हाइट रन रिसोर्ट यानी कि कच्छ वो 6.52 है. इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ इवेंट एग्जीबिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज एट 26.72 करोड़ है. प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट इवेंट यानी कि वेडिंग भी लेते हैं हमारे रिसोर्ट में, कई बार वेडिंग की इवेंट्स आती है, तो वो सारी इवेंट का प्राइवेट जिसमें हमारा फोकस थोड़ा मोटा है, तो वो भी 3.42 करोड़ है. और जो इवेंट कॉन्फ्रेंसेस हमारी नर्मदा केवड़िया यानी कि केवड़िया नर्मदा जो सरदार सरोवर है वहाँ जो हुई कॉन्फ्रेंस, उसका बिजनेस है 18.47 करोड़. तो कुल मिला के 84.75 में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 38.46 करोड़ आफ्टर 10.09 टैक्स प्रोविजन to 28.37 crore. Over to you. Okay. I think thank you Vishnu bhai. Thank you for the details and best wishes. Yeah, thank you. Thank you. Before we take the next question, a reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Swarna Ashish from Asterisk Capital. Please go ahead. Hi sir, thank you for the opportunity. Am I audible? Yes sir. Yes. May we request you to use your handset please. Thank you. Yes. My first question is regarding the projects where we are owning the land, say those which are going to be commissioned in Q3 and Q4. Suppose that I think the Ranthambore is the largest, where we are going for 50 rooms, and we have taken the land for 2.5 crore. And if I assume the 30 lakhs per room, so there will be room development cost for 15 crore, total around 17 crore of capex will be required there. Will we be able to do 18 months payback there also, or in where we own the resort, payback period will be higher, maybe 2.5 years? हेलो सर. मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा इसमें. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, सभी लोगों को काम में आएगा. हमारे जो टोटल प्रोजेक्ट इस साल है उसकी गिनती मैं आपको थोड़ा करवा दूं. एक है वाराणसी जो 23 कैलेंडर ईयर में स्टार्ट हुआ. देन आफ्टर दमन 1, दमन 2, D1, D2, then after Velavadar, Udaipur, Adalat, Ranthambore and Javai. ये टोटल 10 प्रोजेक्ट दिसंबर 23 तक ये साल के प्रोजेक्ट है प्रवेग के. So we would like to finish all these projects before December, but maybe some seasonal rains और उसकी वजह से होता है. So up to we have deadline from our management to my operational and development team to complete it before December 24. Number 1. Out of this all, I would like to say that Javai, Ranthambore, Udaipur, Velavadar is the land is owned by the Praveg. Praveg is the owner of that land. Besides that, I would like to say one thing. We have also acquired one land, space called Dholavira, near Kutch, which is very prime and very UNESCO heritage site nearby. वो प्रोजेक्ट भी इसमें ऐड होने जा रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट इन दिस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के पहले वो भी पूरा करना चाहते हैं. सो टोटल आउट ऑफ दैट 11 प्रोजेक्ट
5 projects is the land which is owned by the Praveg. उसके बाद की मैं बात करूं, अडालज है, वो मेरे को लॉन्ग टर्म 30 इयर्स के लिए मिला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, जो 30,000 मीटर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 2-3 हजार मीटर प्लस माइनस, प्लस एडजॉइनिंग एरिया नियर द वाव स्टेपवेल. अडालज स्टेपवेल इज वेरी फेमस स्टेपवेल. उसके एग्जैक्ट बाजू में हमें को जगह अवार्ड की गई है और उसको भी हम इस साल इनॉग्रेट करने जा रहे हैं. एंड यू नो, अडालज इज प्लेस between Ahmedabad and Gandhinagar, Kalol and very metro town of Gujarat. तो वहाँ का अराउंड 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है. इसमें हम अंडर वाटर रेस्टोरेंट, अंडर वाटर रूम्स विथ सी क्रिएचर, देन आफ्टर आइस स्केटिंग मील, देन इवेंट्स वेन्यू स्पेशली एम्फी थिएटर, उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से सारा पार्क, एक थीम पार्क कम रिसोर्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं. तो वो भी 30 इयर्स के लिए है. तो यू कैन ट्रीट लाइक ए ओन लैंड बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. आई वुड लाइक टू टेल अबाउट नंबर ऑफ रूम्स. वाराणसी 140 है, दमन 33 है, दमन 235 है, दमन 130 है, दमन 235 है, सॉरी दीव 130 है, दीव 35 है. मैं जरा गलती कर बैठा, दमन 1 और 2 में 33, 35 रिस्पेक्टिवली है, दीव 1, 2 में 30 और 35 रिस्पेक्टिवली है. वेलावदर इज 15, जवाई इज 20, रणथंभौर इज 30, उदयपुर इज 30 with extendable capacity of 50. Ranthambore is 30 but extendable capacity up to 75 we can make. Nagda is a 201, Kutch is a 80. Dollarira again add 30-50 rooms, which is going to add in this year. So 11 resorts will be done in this calendar year, including completion period of last quarter of this year. So you can expect
that called CC, cash credit limit of 3 or 5 crore rupees, which we are not using in the month even, in a year. So this is your company's philosophy, and we are going it forward, move it forward. Okay. Thank you, sir. Thank you. I will get back in the queue. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Yashwanti from Cogent Finvest. Please go ahead. So can you throw your light on the international business scenario, how it has been in the FY23? I couldn't get. No. Sir, आपका international business scenario कैसा रहा FY23 में? Till this financial year ended March 23, Yes. कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हमने नहीं किए हैं. जो भी बिजनेस है डोमेस्टिक है. Okay. For your information, we have incorporated 2 companies, Okay. which is I want to brief my investor or my team, Praveg, my shareholder, my investor there. We have incorporated 1 company in Kenya, Praveg Safaris Kenya Limited and Praveg Safari Tanzania Limited. Okay. We are of the views and we are of the mood that being the experiential hospitality company, leading company of India, we would like to extend that guest experience not only in India but also in Kenya, Tanzania. There are 2 places we are going to select and we are trying to have some acquisition there also. But it is premature to say when we will start it. So the project will be of a tent city kind of thing? प्रोजेक्ट अब 10 सिटी जैसे प्रोजेक्ट होंगे क्या वहाँ भी? नहीं, आप समझ सकते हैं कि जो तांजानिया की वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना होता है. तो देयर नॉर्मली नो सिविल स्ट्रक्चर इज परमिटेड. सो ऑलवेज वी हैव बेटर ऑप्शन इन हैव अ सेमी फिनिश और टेम्पररी स्ट्रक्चर, नॉट ओनली टेंट but also some kind of component we will use eco-friendly and make the resorts better for my guest feeling. Okay. Okay. So we can expect some kind of a revenue in FY24 from the international business. Hello? Please loud word. Yeah, we can expect some kind of a revenue from the international business in FY24. It is very premature to say. I already stated. But, the Praveg experience is, if we acquire, we will start it. Okay. So it depends upon situation, how we acquire. Okay. Okay. So considering the rising tourism rate in India, what utilization of your facilities you expect for FY24? फिर से आप बोलिए, आपका वॉइस मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है. कंसिडरिंग द राइजिंग टूरिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है FY24 में? Utilization means occupancy ratio. Yes, occupancy ratio, because we are expanding the capacities also. So how you expect that utilization or the occupancy? Yeah. Good question. I would like to say that in Kutch, we have achieved 69% occupancy in this 4 months. Okay. And the income is 6.52 crore against our original investment of 5 crore. In Kutch, we are now achieving 6.52 crore. The density of Kutch is already written on in the books. You can say that 0 investment and we are raising 6.52 crore. And this is 68% guest ratio. Number 2, Kevadia, we have achieved this year 40 between, it is, I have to calculate exactly, but it's a 40% to 50%. And I would point out one thing, कि केवड़िया के अंदर मंडे को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद रहता है, तो 107 डेज की जगह 6 डे ऑपरेशन होता है. तो इसका मतलब हुआ 85% ओनली अचीवेबल. आउट ऑफ दैट 40 to 45% गेस्ट वी हैव अचीव्ड दिस ईयर, एंड दिस इज डे बाय डे इंक्रीजिंग. लास्ट ईयर से इस साल अच्छा है. वी आर गोइंग टू
complete this fifth year. So ये day by day बढ़ रहा है. So that is good sign that we are keeping good business from that also. Besides that, Varanasi, many times I'm telling that our gross revenue is equal to CapEx. We are hopeful that 1.5 years means 18 months. We would 18 or 21 months. We will recover entire CapEx of Varanasi also, which is around 25 crore, 24 crore. So this is the scene of present situation, and we are getting good business. And next year means the next season, we are expecting good business from Varanasi. So that occupancy is also this year 35% we have achieved. That is also good number because of in May we have to close it down because of heat. वाराणसी के जो रिवर है वो सैंडी रिवर है, तो उसके अंदर हिट की वजह से ज़्यादा हिट रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि 9 महीने में उसका अच्छा काम नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेशन थी. फिर भी वी विल अचीव 21 मंथ ग्रोस रेवेन्यू इज इक्वल टू कैपेक्स. Okay, that is really great. So, on any other part of the India you are planning to expand other than the western and the north side? We have listed out many projects for calendar year 24. After completion of 11, we have more than 11 projects next year. I would like to brief you about these details in the time to come. Okay. But we are of the mood that every year we will going to start 10 to 15 projects, resorts every year. Okay. And that will be the amazing development which Praveg is going to do. So one project costs around 25 to 30 crore for you, right? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते. मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया कि पर रूम को आप मल्टीप्लाई करिए 15 लाख रुपीज. वहाँ जहाँ टेम्पररी ओन स्ट्रक्चर ओन लैंड नहीं है, जहाँ ओन लैंड है वहाँ 40 लाख रुपीज रख के चल सकते हैं. सर्टेन जैसे कि उदयपुर है, मैं आपको बताऊँ, उदयपुर है, वेलावदर है, दैट इज द कॉस्टलीस्ट रिसोर्ट ऑफ प्रोवेग, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं. मैं आपको थोड़ा हमारे इन्वेस्टर को एक अच्छा मैसेज देने के लिए थोड़ी बात करता हूँ उसका क्रिएटिव साइड का. और एमडी इज अ फुल ऑफ क्रिएटिव पर्सन. जो उदयपुर है उसका जो माउंटेन है, उसका डूंगर लिया है, पर्वत लिया है, उसके ऊपर हम ग्लास हाउस बनाने जा रहे हैं, ग्लास रिसोर्ट. सो माई गेस्ट कैन फील एट नाइट दैट दे आर स्लीपिंग इन ओवर, खुले में रह रहे हैं, ऊपर स्टार गेजिंग कर सकेंगे, पूरा आजू बाजू पूरा फॉरेस्ट है, उसका लुत्फ उठा सकेंगे. तो ऐसा एक रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं. उसका जो ARR है अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट इट विल बी अमेजिंग. लाइक सेम वे वेलावदर हम बनाने जा रहे हैं 15 रूम्स, बट इट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू बिल्ड. वेलावदर इज अ बग सेंचुरी जिसके अंदर काले हिरन, ब्लैक बग हम बोलते हैं, वो होते हैं, और उसके हिसाब से सारा रिसोर्ट क्रिएट किया गया है, ओपन रिसोर्ट. तो सारे उसकी वाटर, उसकी जो उसको पसंद आए ऐसी जो जगह बनाने जा रहे हैं बक्स को, तो हमारे गेस्ट के रूम के आजू बाजू बक्स घूमते रहेंगे और बैठेंगे, तो नजदीक से रूम में से देख सकेंगे बक्स को. तो ऐसा फीलिंग हमारा कुछ ना कुछ गेस्ट को थ्रिल और फील करवाते हैं. तो वो एक फीलिंग हम फ्यूचर में इंटरनेशनल एक्सपोजर में, जो सारंगेटी और मसाई मारा आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा अच्छा फॉरेस्ट है, तो इसके अंदर भी ऐसा करने का विजन से आगे बढ़ रहे हैं. ओके ओके सर. सर, my last question is this: what is the procedure of receiving contract from government, and what is the period normally it is valid for? The contract receiving method is a tender. Yes. And you know that our company is having good credentials, so we are eligible in all such kind of tender, and having good experience, we have some different leverage in the market to get this opportunity. Okay. आपका दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं समझा. आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने भी समझा. What period generally it is valid for? Generally after receiving a contract, normally how many years it is valid for? It depend upon tender term. Some tenders come to 5 years plus extension. Some tender come 10 years extension. Some tender come 30 years. So it depend upon tender, but minimum terms is 3 to 5 years. Okay, 3 to 5 years. Okay. That is always renewable, except
the state not want to renew, then the matter is different. But we are of the Praveg, अभी जो inventory add करने जा रहा है, inventory means resort. So अभी next year से around 13 resort operationalize हो रहे हैं, उसके बाद 11-12 हो रहे हैं, तो around 25 resort होने के बाद एक आध दो project renew होते हैं, नहीं होते हैं, so that not affect to the company's overall progress and development, because उसके सामने हमने और 4-5 बना लिए. 4-5 बना, बराबर. और ये 25 रिसोर्ट एट द रेट ऑफ अराउंड 30 to 35 रूम्स होंगे. आपने Which one? ये 25 रिसोर्ट आएंगे तो मिनिमम उसमें 30 to 35 रूम्स होंगे. किसमें? ये जो 25 रिसोर्ट आ रहे हैं. नहीं, ऐसा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. मैं आपको सारा अभी डिटेल में दिया रूम्स, उसके हिसाब से होते हैं. कई बार रूम 200 भी होते हैं, कई बार टेंडर में 100 होते हैं. तो और ये जो हमने हमारी जगह ली है फॉर योर गेस्ट और इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, दैट ऑलवेज एक्सटेंडेबल. अगर 15 हमने वेलावदर किया है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और 15 कर सकते हैं. वी हैव एक्वायर्ड ह्यूज लैंड. ओके. सो एवरीवेयर वी आर बाइंग मोर लैंड देन रिक्वायर्ड. ओके. तो उसको हम 2-3 फोल्ड तक डेवलप कर सकते हैं. 2-3 फोल्ड तक हम रूम्स को डेवलप कर सकते हैं सर्टेन प्लेसेस पे. Okay, sir. That is really great and really prospering prospect of the company. All the best for the future, sir. And thank you for always answering my question. Yeah. Is there any? Due to my our shareholder trust and give trust on our management, it's our more responsibility to give good results and good progress for my shareholders. Thank you. Our next question is from the line of Digant Baum from SVIP Capital. Please go ahead. Hello. Namaste, sir. Mr. Digant, may we request you to use the handset as you are not audible, sir? Is it better now? Hello, is it better now? No, sir, we cannot hear you clearly, sir. Is it better now? Yes, sir, please go ahead. Yeah, so I was just asking, sir, हर टाइम जो हमको दमनंदू या ऐसे जो प्रॉपर्टीज बंद करने पड़ते हैं, लेक साइड हो या रिवर्स से हो, तो उसमें अपना कॉस्ट क्या आता है? एवरी टाइम वो डिसमेंटल करना, वो टाइम पे अपने एम्प्लॉयज भी अपन जो एम्प्लॉय करते हैं एंड वापस से उसको रीडेवलप करना. गुड क्वेश्चन. मैं आपको जरा ब्रीफ करूं कि दमन और दीव वो डिसमेंटल वाले प्रोजेक्ट नहीं है. इन दिस ऑल लिस्ट 11+ हमारे एग्जिस्टिंग 13 या 14 रिसोर्ट के अंदर ओनली 2 रिसोर्ट इज लाइक दैट. कच्छ का जो टेंट सिटी है वो हम डिसमेंटल करते हैं और दूसरा वाराणसी का करते हैं. दैट कॉस्ट मी 1 crore रुपीज अप्रोक्सीमेटली वाराणसी. एंड सो फार कच्छ इज कंसर्न इज अराउंड 20 lakh समथिंग. ओके. एंड सर इसमें एम्प्लॉयज कॉस्ट भी आपने काउंट किया हुआ है 1 crore में? एम्प्लॉय नहीं, 1 crore जो कॉस्ट आती है, दैट कॉस्ट ऑफ मैन पावर लेबर रिटेन बाय अस इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग. ओके. बट दैट मे वेरी बाय स्लाइड परसेंटेज. राइट. एंड सर जैसे नॉर्मली जो अदर अपने हॉस्पिटलिटी कंपनीज है, स्पेशलिटी हो या इंडियन होटल्स हो, they give vouchers to their shareholders. Why don't we plan, क्योंकि उससे भी अपना क्या एक ब्रांड बिल्डिंग तो होएगा ही, प्लस अपना ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ सकता है. Sir, I would like to invite all my shareholders, but the problem is SEBI guideline doesn't permit to give such voucher to stakeholder. It is present regulation, and that's why we are of desirous to invite my all shareholders to be a part of Praveg hospitality project. Vouchers नहीं, but डिस्काउंट कूपन जैसे होते हैं इंडियन होटल्स देता है एंड इवन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देता है. I would like to ask my company secretary if it is permitted, then definitely we want to do this. Mukesh bhai, you are requested to execute if it is permitted by SEBI or BSE, whatever guideline of स्टॉक एक्सचेंज इज देयर. उसके हिसाब से अगर हम पॉसिबल है तो वी विल इमीडिएटली स्टार्ट दैट स्कीम टू माय शेयर होल्डर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. We would love to plan all visit to all the properties. So your voice is not audible.
हम पॉलिसी भी उसके लिए बना रहे हैं एंड बहुत ही जल्द इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Perfect. Thank you so much, sir. We would really love to visit the properties. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to 1 or 2 per participant. Should you have a follow-up question, we would request you to rejoin the queue. Thank you. Our next question is from the line of Swarna Ashish from AlphaStreet Capital. Please go ahead. Hi, sir. Thanks for the opportunity. So, how is the response at Lighthouse Beach? What kind of occupancy ratio we are seeing there in last 15 days? Hello? Yes, sir. Could you please use your handset, please? Hello? Is it better now? Daman Lighthouse occupancy ratio for this initial 15 days is 98%. Only hardly 10 rooms was missing in last 15 days. 10 rooms हम नहीं खाली रही है. बाकी 33 rooms के अंदर 33 10 दिन चली और 32 बाकी के 5 दिन चली. Around 98% is the guest ratio, occupancy ratio. You wouldn't believe it even. And we are thinking about the same kind of response in Jampur Beach and AlphaStreet Beach. My marketing team is very बहुत उत्साहित है कि यही कन्वर्जन मेरे को दमन में और दीव में मिलेगा. एंड जो हमारा प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान में आएगा वहाँ पे भी हमारा ऑक्यूपेंसी. आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है. स्टार्ट होने के बाद में आपको ट्रेंड मिलेगा उसका, लेकिन जो है स्टार्ट हुआ है उसका मैंने आपको दिया 98%. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सेम रिस्पॉन्स इन अनदर रिसोर्ट बिकॉज वी हैव लैक ऑफ इन्वेंटरी which is soon going to add in Daman 2, which is 35 rooms, and same response we are expecting in Diu also, because it is very crucial property. Okay, sir. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Harshil Solanki from Equity Capital. Please go ahead. Hi, good afternoon team. I had just one question. सर, हमने अभी रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूट किया है और हम केपेक्स कर रहे हैं और 25 में भी हम बोल रहे हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन करके केपेक्स करेंगे. तो सर समझना था कि मैनेजमेंट के माइंडसेट में क्या चेंज हो रहा है इतना अग्रेसिव केपेक्स करने के लिए, कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है और इस वजह से आप इक्विटी डाइल्यूट करके इतना अग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं. Number one, we are not diluting equity. We are raising equity because of debt-free policy of the company. And आप जानते हैं कि 12 रिसोर्ट इस साल आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 12 रिसोर्ट आ रहे हैं, तो कंपनी को फंड की जरूरत पड़ेगी. एंड वी नीड अ गुड इन्वेस्टर, गुड स्टेक होल्डर, विच बिकम पार्ट ऑफ Praveg, and we are issuing the equity for that kind of good preferential investor. By that way, you can say we are diluting. But you know, अगर मैं अकेला काम करूंगा तो 3 रिसोर्ट कर सकूंगा, 5 रिसोर्ट कर सकूंगा. अगर हम सब मिलके करेंगे तो 50 रिसोर्ट कर सकेंगे. उसके फ्रूट हमेरे को भी मिल रहे हैं, ओल्ड स्टेक होल्डर को भी मिल रहे हैं और नए स्टेक होल्डर को भी मिल रहे हैं. सो बाय दैट वे वी बोथ न्यू इन्वेस्टर एज वेल एज ओल्ड इन्वेस्टर बोथ आर एट गुड लीवरेज, एंड दैट्स व्हाई वी आर डाइल्यूटिंग इक्विटी बाय दैट वे. कंपनी सेल्फ सफिशिएंट कब तक होगा फ्यूचर कैपेक्स? और मैं आपको बताऊं कि प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट हुआ इसके अंदर प्रमोटर्स ने खुद ने 11 लाख शेयर लिए, उसके बाद 11 लाख शेयर मेरी फैमिली ने लिए. टोटल 22 लाख शेयर वी हैव एडेड दैट. यू डोंट गो टू परसेंटेज, यू गो टू न्यू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रमोटर. ओके, अंडरस्टैंड हर्षिल? Yeah, got it. Arshil, thank you. Thank you. Our next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almond's Capital. Please go ahead. Sir, thank you for giving me an opportunity.
सर आपने जो क्वार्टर वाइज रूम स्टार्ट होने के जो प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं वो हिसाब से बाय एंड ऑफ FY24 अपना टोटल रूम्स कितना रेडी हो जाएगा? अभी 450 है शायद, राइट? अभी 140 plus 80 plus 201 and 33 राइट। 4 12 15 5 अभी 450 है, 454 है प्रेजेंट, इंक्लूडिंग दिस 2 रिसोर्ट। ये बाकी के जो 9 रिसोर्ट है, 11 में से 2 चालू हो गए, 9 रिसोर्ट है, उसका मैं आपको नंबर देता हूँ। जस्ट मिनट होल्ड ऑन। 400 जेवा थे 350 नवा एड कितना थे न्यू एड Vishnu sir. Just wait, please. Just wait. For you, I am making this 100. Yes, sir. Yeah. Around new 200 room is going to add. So at around remaining. Yeah, 650 to 660 rooms will be there by end of 650 to 700 rooms will be there by this March. Okay, sir. And for this expansion, we will not be diluting any extra equity in current financial year, right? We always we need funds for which it's a management decision that we will not dilute, but we will add fresh issue. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Okay, sir. And sir, as you mentioned about with your own equity, you will be able to add only 3 resorts. At the same time, what are our plans to induct the professional management? Because after certain limits, we will need to bring in some professionals from the hospitality and related fields. So what are our plans for that? Praveg is transforming 100%. Yes. We are having a good team of development, creativity, having a professional background to do so. Same way we have a good operation team who is based from professional or industries only. We have government business team which doing that work. We have HR and administration team. We have account finance teams. All are professionally managed people. And the company is transforming. We have 4 directors who is not from any family of the promoters. He is from various industrial background. I would like to say Mr. Bakshi, he is the ex-president of ICSI, CS Company Secretary of India. Right. Mr. R.C. Patel, he is ex-Reliance and very professional of petroleum and industries. Even even आपको मैं बताऊं थोड़ा कि एंटेला भी प्रोजेक्ट आरसी पटेल साहब खुद के अंडर में हुआ है बॉम्बे का, तो वो है। तीसरे हमारे ए के पांडा साहब है जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। उसके अलावा मिस्टर जेपी शाह इज अ फाइनेंस कंसल्टेंट इन गुजरात, फेमस फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। उसके अलावा एक कंपनी सेक्रेटरी को जस्ट हमने ऐड किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, तो ऑल दे आर प्रोफेशनल। मिस्टर पारस पटेल एमडी इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम बैकग्राउंड 95 and he has a vast experience of this industry. Okay. So apart from that, my new team is we are adding from industrial professional only. So you keep assured that we will soon be a more professional management company. I am non-executive person, even chartered accountant. Right. So all the team, Mrs. Bijal Parikh, is an MBA finance, having a 25 years industrial experience. Right. She is looking after account finance. So all professionals are contributing their role in the development and transformation of Praveg.
Right. Sir, my last question is about our plans to go in the northeast. So have you identified any locations and any work has started there? We have identified location, but we can cater 10 to 15 projects. It's not a small thing. Yes. One even you can compare with Probero and Taj. Even they're working on franchisee model. They not add 15 inventory in a year, which Praveg are doing, and with great result and great expectation of my Bombay and India's and foreign institutional investor. So we can match up to 15. My present team we are building is to develop 15 resorts per year, which is presently under recruitment stage, and we are trying to achieve that figure. That's great, sir. Thank you and all the best. Yeah, thank you. Thank you. Our next question is from the line of Drashti Shah from Blue Lotus Capital Advisors LLP. Please go ahead. Hello. Yeah. Hello. I wanted to understand what should be our average room rent per average room rent. Please repeat. I wanted to understand what should be our average rent per room. It's 8,400 last year, 22 March. 23 figure is still under calculation. Sorry, project. Mukesh bhai, figure is came to you? Yeah. Oh, very good. I would like to tell this figure. 10 City Nabda last year was 8,400. It's now 8,500 to 9,000 in between. 10 City Varanasi is 9,200 to 9,700. This is Kutch. The Kutch property is 9,500 rupees to 9,700. So room ARR also increased this year to the extent of, I can say, 8%. Okay. So can you expect 10 to 12,000 average rent room for next year for FY24? Please repeat. Can we expect 10 to 12,000 room rent for average room rent ARR for FY24? It's very difficult to predict, but I assure that this ARR will always be on increasing trend because of 5 property is a very experiential property which is going to add in this year. So you expect amazing figure next year, 24-5. Okay, so around 10 to 12,000 kind of ARR and capacity utilization of around 50%. Maybe. Okay. Maybe. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisors for closing comments. Thanks everyone for joining the conference call of Praveg Limited. If you have any query, you can write us at research@kirinadvisors.com. And once more, thank you everyone for joining the conference call. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kiran. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.